Next is endocrinology. So now let us do the endocrinology. A newborn on examination has dry and rough skin. So the skin is rough and dry. That is generally mixed edema. That is going to answer mixed edema. Next is rough hair along with macroglossia. Macroglossia means the tongue is large. So there is rough hair along with macroglossia. What could be the likely diagnosis in this case? So mixed edema, macroglossia. This is going to answer generally cretinism. This is going to answer cretinism. So if we talk about the Prader-Willi there will be neonatal hypotonia, delayed milestone and hypogonadism. The most important thing here will be हाइपोगोनाइडिज्म. ठीक है. मिक्स एडिमा प्लस मैक्रोग्लोसिया, दिस इज गोइंग टू आंसर हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसका केस जनरली हमारे पास यहाँ पे जनरली दिया हुआ है क्रेटिनिज्म. एडवर्ड सिंड्रोम में देयर विल बी क्लेफ्ट लिप और पैलेट. Very important, cleft lip and palate, rocker bottom feet, microcephaly, low set ears and congenital heart and kidney defects will be there. If we talk about the galactosemia, there will be aptitude failure to thrive plus bilateral cataracts. The old drop cataracts will be given there. A 7-year-old child is present with a short stretcher. On biochemical examination, growth hormone levels are generally elevated. Growth hormone levels are elevated with very low levels of IGF. Which of the following could be generally the possible defect in this child? So elevated generally on biochemical examination, growth hormone levels GH are generally elevated. Very low levels of IGF. Which of the following could be the possible diagnosis? So look, this is going to answer Laron syndrome. This is going to answer the Laron syndrome. So GH are generally here, growth hormones are elevated, but this is not working because the growth hormone receptor जो होता है, that receptor is not functioning. So there is a defect in the receptor. That's why growth hormone are enough, but growth receptor is not working. That's why also the growth hormones are generally enough. So this is diagnosis of the Laron syndrome. This is generally due to the GH, growth hormone receptor generally deficiency plus low IGF-1. So that is also given here. IGF is also low. So this is generally going to ask your GH receptor deficiency. GHRH deficiency अगर होगा तो जो वहाँ पे क्या दिया होगा क्वेश्चन में, ग्रोथ हार्मोन की कमी दी होगी, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ. GH deficiency, growth hormone deficiency, that is GH is increased in क्वेश्चन दिया हुआ, सो ये भी नहीं हो सकता. सो दिस बोथ आर जनरली नॉट द आंसर. GnRH, gonadotropin receptor hormone generally, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नॉट रिसेप्टर हार्मोन डेफिशिएंसी. यहाँ पे क्या हो जाएगा जनरली, ग्रोथ हार्मोन विल बी डिक्रीज. सो ये तीनों केस में ग्रोथ हार्मोन, दो केसेज में ग्रोथ हार्मोन विल बी डिक्रीज एंड जनरली दिस GH डेफिशिएंसी तो ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज विल बी देयर. सो दिस इज गोइंग टू आंसर ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंसी एंड दिस इज नथिंग बट द Laron syndrome. A 3-week-old boy was brought to the pediatric OPD with yellowish discoloration of skin. This is going to answer jaundice, and hypotonia is also present. On examination, the baby also has a large protruded tongue. The tongue is large and protruded, and umbilical hernia is also there. Which of the following would be the initial step in the evaluation of his clinical condition? Initial step. So this is generally going to answer. क्या दिया हुआ है, येलोइश डिस्कॉलरेशन दिया हुआ है, हाइपोटोनिया इज देयर, बेबी हैज लार्ज प्रोट्रूटेड टंग एंड अम्बिलिकल हर्निया भी दिया हुआ है. सो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म. यहाँ पे क्या होगा, TSH विल बी इंक्रीज. सो लेट्स सी द अदर थिंग्स है. सो यहाँ पे क्या, सेरम कॉर्टिसोल लेवल को चेक करोगे, नहीं. सेप्सिस स्क्रीनिंग, नो. दीज आर जनरली द फीचर्स ऑफ सेप्सिस और कुशिंगोइड अपीयरेंस. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी डन here. We have to we already said that this is the case of generally the congenital hypothyroidism or cretinism का केस हो सकता है. So for that we have to just go towards the serum TSH level. We have to see the serum TSH level. If it is increased, that is going towards our congenital hypothyroidism. So this is all for the one more question. So here we have wide open posterior fontanelle with large tongue with rough dry skin is seen in. So this is nothing but the हाइपोथायरॉयडिज्म, जो ऊपर में ही हमने एक केस देखा हुआ था, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. पेलाग्रा की अगर मैं बात करूँ तो देयर विल बी एरिदेमा बर्निंग ऑन सन एक्सपोज पार्ट. पेलाग्रा में देयर विल बी ऑल ऑफ यू नो अबाउट द पेलाग्रा, है ना, पेलाग्रा के बारे में सबको पता है. सो दिस इज जनरली एरिदेमा बर्निंग ऑन सन एक्सपोज पार्ट्स. डाउन सिंड्रोम जनरली में क्या होगा, प्रोट्यूबरेंट टंग विथ ब्रैकिसिफेली एंड अर्ली क्लोजर ऑफ द
fontanelles, early closure of the fontanelles will be there, protuberant tongue will be there. ठीक है, यहाँ पे देखो लार्ज टंग है यहाँ पे, बट जनरली द अर्ली क्लोजर ऑफ fontanelles आर गिवन. ठीक है, अर्ली क्लोजर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाइड ओपन पोस्टीरियर fontanelle. सो डाउन सिंड्रोम में तो अर्ली क्लोजर विल बी देयर, सो वाइड ओपन पोस्टीरियर fontanelle will not be seen in the case of the Down syndrome. Next you see nutritional rickets. If you talk about the nutritional rickets, so there will be wide open anterior fontanelles, wide open anterior fontanelle will be no posterior fontanelle. So this is generally going to answer hypothyroidism. So this is all about your endocrinology. बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, and if you just see it for 4 or 5 minutes, you will be good to go with any question from this topic. So last only one miscellaneous topic is remaining, and that I will do in the miscellaneous and pediatric infections. Okay, emergency, miscellaneous, pediatric, emergency and infection. 3 more topics are left, and we will do it in the next classes. So this much for this video. I'll try to meet you in the next class again. So just if you have not seen all the videos, please go towards the general, the most of the playlist have been made there. You have to just find the playlist which you want, and all the PYQs have been done there. One shots में मैंने रख दिए respective generally playlist में. I have kept the one shot videos also. So if you want to go for one shot videos, you can go for there also. And if you want to do it like generally topic wise, so you can go for topic wise videos also. And my sincere request will be to you that you just complete the questions from here and just go to your whichever like marrow, प्रेप, सेरेबेलम, एनी वन ऐप दैट यू हैव, है ना, कोई भी एक ऐप है जो आपके पास, जस्ट गो टू दैट ऐप एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. द क्वेश्चन बैंक दैट इज क्यू बैंक गिवन टॉपिक वाइज या फिर जो भी दिया हुआ है जहाँ से भी है. जैसे अब यहाँ से आपने अभी क्वेश्चन किया इंडोक्राइनोलॉजी, सो जस्ट गो टू द क्यू बैंक सेशन देयर, है ना, क्यू बैंक में जाके इंडोक्राइनोलॉजी जो पेडियाट्रिक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड यू विल सी ऑल द क्वेश्चन विल बी वेरी इजीली सॉल्व्ड इफ यू जस्ट हैव डन दिस class. So this much for this video. I'll meet you in the next video. Thank you so much.